Hello class 8 students, I am your maths teacher Nitin. In today's lecture, we will start a new chapter, chapter 7, cube and cube roots of your book. Okay, now we are in lecture 1 and we are starting a new chapter, cubes and cube roots. Okay, now student, what is a cube? What is a cube? आपने फिगर देखा होगा, what is a cube? अगर हम फिगर की बात करें, a cube is a figure whose three faces, length, breadth and height, they are same. Okay, length, breadth and height, they all are same. Okay, length is A, breadth is A and height is A. So any figure in which all three dimensions, length, breadth and height, they are same, that figure is known as cube. But in this chapter we are studying about numbers. Okay, so if I write 2 to the power 3, now how we will read it? This will be read as 2 to the power 3 or 2 cube, right? कैसे रीड करेंगे? 2 cube. 2 cube means नंबर को हम 3 times मल्टीप्लाई करते हैं by itself, that is 2 into 2 into 2. Okay, 2 cube, that means हमने नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई किया है. A number multiplied by itself 3 times will give you a cube of a number. Okay students, now in this case हमने 2 example लिया है. 2 to the power 3, if I multiply 2 by itself 3 times, 2 to the 4 2s are 8, so my answer is 8. So cube of 2 is 8. Cube of 2 is equal to 8. Clear students? So any number, any natural number, any integer in fact raised to the power 3 is known as cube. Okay, if you simplify it, you will get your answer as a cube of that number. Now for example, if I write 3 to the power 3, so how we will read it as? We will read it 3 cube. Now we will solve it. 3 into 3 into 3, that is 27. So 3 cube is equal to 27. So any number multiplied by itself 3 times is known as a cube of a number. Clear है student? Are you clear? Cube figure मैंने आपको समझाया, हम figure की बात नहीं कर रहे हैं. We are studying about numbers. किसी भी number का cube का meaning है, if we multiply that number 3 times, you will get the cube of a number. Now as a result, अभी हमारा 27 आंसर आया है, ये 8 आंसर आया है. These answers are known as perfect cube. What these answers are known as? Perfect cube. 8 is a perfect cube of 2 and 27 is a perfect cube of 3. Clear students? Yes. Now one more example I will give to you. Now if I say write the perfect cube of 4, very simple. What you will do, you will write 4 as a base and raise to the power 3. This is cube. Now you solve it, multiply 4 by 3 times. So what is your answer? 4 4 are 60, 16 4s are 64. So 64 is the perfect cube of 4. Clear students? So that's how we will find out the cube. Okay? Now students, if I ask you, is 9 a cube? Is 9 a cube of any number? Tell me, is 9 a cube? Now, cube कब होता है बेटा? Cube होता है जब हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, then only we get a cube. But in this case, 9, आप फैक्टर्स बना लीजिए. अगर हम 3 से करते हैं, 3 into 3, it is 9. तो ये मेरा 3 कंप्लीट नहीं हुआ ना, है ना? ये मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा. Okay, if we try it by 2, 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 2s are 8. It is 8. 9 नहीं आया मेरा. If I try it by 4, तो मेरा 64 आएगा. So it is clear that
9 is not a perfect cube of any number. Right, students? Good. Now, students, few properties about cubes. Okay. Now, always remember, student, cube of an even number is always an even number. Right? Cube of even number is always a even number. Right? We can check with an example. For example, let's say we have a 2. हम 2 का क्यूब निकालते हैं. Try to find out the cube of 3. So it is very easy. You will multiply it 2 3 times. Okay, multiply it. You will get 8. So 2 is even number and 8 is also an even number. Right? Try with some other example. Let's say 4. 4 का cube. 4 is even number and find out the cube of 4. Multiply 4 3 times. That is 64. So 64 again is a cube number. So student, try with other even numbers. You will get your answer as an even number. So always remember, a cube of an even number is a even number. Second, cube of odd number is always odd number. Right? Now for example, let's say 3. What is the cube of 3? You know that cube of 3 is 3 into 3 into 3, that is 9. 9 is an odd number. 3 is an odd number. So therefore 9 is, you got cube of 3 is 9. 9 is also an odd number. So rule number 2 says that cube of odd number is always an odd number. You can try with one more example. Let's say 5. Cube of 5 is 5 multiplied by 5 multiplied by 5, that is 125, right? So 125 again is an odd number. So always remember, student, cube of even number is always an even number and the cube of odd number is always an odd number. Good, students? Good. Now students, I am giving you one task. Okay, the task is find out the cubes of first 10 natural numbers. Okay, find cube of first 10 natural numbers. Okay, this is your task. Okay, find out the cube. 1 ka cube is how much? Like 1. 2 ka cube, that is 2 into 2 into 2 is 8 and so on. Okay, this is your task. Find out the cubes of first 10 natural numbers. Okay, students? Good. Now students, we will learn cube and their prime factors. Okay, this is the task. You do it after the class. Okay, now we will learn how we will find out the prime factors of a cube number. Okay, cube and prime factors of cube number. Okay, now for example, let's take a number. Let's say 216 is a number. Okay, now 216 is a cube, I know it. Okay, but first of all, before writing the number, before writing कि किसका नंबर है, we will make their prime factors. हमको prime factor से ही आंसर मिल जाएगा students. So we will make prime factors of 16. आपको आता है prime factor बनाना? 2 1s are 2, 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So you got the prime factors of 216. 216 can be written as 2 into 2 into 2 and 3 into 3 into 3. You can write it in this way. These are the prime factors of 216. Now students, make, आपको ग्रुप बनाना है 3 का. ओके, डू यू रिमेंबर हमने स्क्वायर में क्या किया था? हम 2 का ग्रुप बनाया करते थे, पेयर बनाया करते थे. बट इन दिस चैप्टर वी विल मेक द ग्रुप ऑफ 3. देखो 2 के हमने 3 का एक ग्रुप बन गया, 3 का एक ग्रुप बन गया. इट कैन बी रिटन एज
2 to the power 3 into 3 to the power 3. Okay, 2 to the power 3 and 3 to the power 3. क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक्सपोनेंट्स किए हैं एंड यू नो द रूल, अगर हमारा पावर सेम होता है, ओके, नाउ these are the prime factors of 216. ओके, हमने प्राइम फैक्टर बनाया, 216 का प्राइम फैक्टर्स हमने किया, हमारा आंसर आता है 2 to the power 3 into 3 to the power 3. ओके, अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि 216 किसका क्यूब है, व्हाट इज दैट नंबर जिसका ये क्यूब बन रहा है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस नंबर का क्यूब है. फॉर एग्जांपल, हमने 216 लिया, 216 के हमने फैक्टर्स किए, हमारे सामने फैक्टर्स आ गए हैं, हमने इनको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया है, 2 को हमने 2 to the power 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा. नाउ स्टूडेंट, यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है इफ वी हैव द सेम पावर, अगर हमारी पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लिखते हैं 2 into 3 टू द होल पावर, हम पावर को एक बार लिखते हैं, राइट. दिस इज द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट और हम उसको यूज कर रहे हैं. नाउ 2 3 are 6, दैट इज 6 to the power 3. तो ये जो 216 है, दैट इज द क्यूब ऑफ 6 स्टूडेंट. क्लियर है स्टूडेंट्स? गुड. Now students, we will learn how to find out that a given number is a perfect cube or not. Okay, is number a perfect cube? How we will find out? What is the method to find out that a given number is a perfect cube? Now student, we will take an example. Let's say we take a number 243. Okay, this is the number. Now to find out whether it is a perfect cube or not, ये perfect cube है या नहीं, इसके लिए क्या करना होगा बेटे, we will start factorizing it. हम इसका प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है. 243 का प्राइम फैक्टर हमने बनाया, start making factors. We will start with 3, 3 8s are 24, 3 1s are 3, again by 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Okay, now factors of 243 are क्या क्या है बेटा, 3 into 3 into 3 into 3 into 3, right? These are the factors of 243. Now start making group of 3. बना दिया, लेकिन बेटा ये वाला जो 3 है, ये वाला सेकंड ग्रुप मेरा 3 का नहीं बन रहा है. ओके, व्हाई? बिकॉज एक 3 मिसिंग है मेरा. ओके, केवल 2 ही 3s हैं and for the second group I need one more 3, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं. So you can say that जब मेरा ग्रुप ही नहीं बन रहा है, you can say that 243 is not a perfect cube. क्लियर है स्टूडेंट्स? जिसमें हमारा ग्रुपिंग ही नहीं बन रहा, ग्रुप नहीं बन रहा है, वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, राइट. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. Let's say 625. 625 is a number. आपको बताना है is this a perfect cube? Again we will start doing their factors. हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट्स. Okay. Now students see 625 can be written as 5 into 5 into 5 into 5. Okay, now start making their groups. 3 3 का ग्रुप्स बनाना है. as I told you, मेरा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, बट मेरा सेकंड ग्रुप तो है ही नहीं, सिर्फ एक नंबर बचा हुआ है. ठीक है, मेरा ग्रुप कंप्लीट नहीं है ना, मेरे पास कितने मिसिंग है, 2 5s मिसिंग है. सो अगेन 625 is not a perfect क्यूब. राइट स्टूडेंट्स, आप ऐसे पता लगा सकते हैं. क्लियर है? नाउ सेकंड एग्जांपल, लेट्स से 27. इफ यू मेक द फैक्टर्स ऑफ 27, व्हाट यू विल फाइंड, आपने 27 के फैक्टर किए तो यू विल गेट दिस 3 मिलेंगे आपको. ठीक है, इट इज अ परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3. ये मेरा पूरा ग्रुप बन रहा है. सो यू कैन से दैट 27
is a perfect cube. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप इजीली चेक कर सकते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दैट अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, गुड. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज 7.1 of your book. Okay, open page number 114, exercise 7.1. Start doing our exercise. Now question number 1, student. Question number 1 is, which of the following numbers are not perfect cube? Are not perfect cube. Okay, the question is, which of the following numbers are not perfect cube? Right? First one I will do, that is 216. Make the factors of 216, students. हम इसका फैक्टर बनाएंगे क्योंकि विदाउट फैक्टर्स आप नहीं बता सकते. Okay, 216 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, pairing 2 to the power 3 into 3 to the power 3. Yes, it is the cube of 6. 216, it is the cube of 6. So 216 is a perfect cube. Now come to the second part, student. Second part is 128. Okay, now make, without making prime factorization, prime factors, I cannot tell whether a given number is a perfect cube or not. So I will start doing factors. 128 का factors बनाते हैं student. 128, 2 6 are 12, 2 4 are 8. Okay, so 128 can be written as 2 into 2 into 2, 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 into 6 into 7. Now student, these are the prime factors which I got after prime factorizing 128. Okay, now start making their groups of 3. Now 1 2 is left. मेरे 2 ग्रुप्स कंप्लीट हो गए हैं, 1 बच गया है. दैट मीन्स अगर कोई भी एक नंबर भी बचता है, यू विल से दैट a given number is not a perfect cube. You got the reason? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा ग्रुप ही नहीं बन रहा है, एक बच गया है. अगर मेरा कंप्लीट ग्रुपिंग हो जाती है, एक भी नहीं बचता, तो इन दैट केस वी कैन से a given number is a perfect cube. Okay, so 128 is not a perfect cube. Like this, do other parts of question number 1. फैक्टर्स करके ग्रुपिंग करना है. ग्रुपिंग बन जाती है तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं बनती है then it is not a perfect cube. Okay, good. Now come to question number 2. Student. Question number 2 is, find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to get a perfect cube. आपको मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर, ये बताना है. What is the method? Which should I do for you? I will do the second one, 256. Okay, 256. हम 256 को स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टिंग नंबर मेरा परफेक्ट क्यूब आ जाए. ओके, ठीक है. व्हाट वी विल डू, आई विल डू देयर प्राइम फैक्टर्स. हमको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स. 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 2 2 2 1. Okay, these are the factors. Now make their pairs. एक ग्रुप बन गया, सेकेंड ग्रुप बन गया. Now see the third one. I am writing here 256 can be written as 2 into 2 into 2. Okay, make their pairs. एक पेयर कंप्लीट, वेरी गुड. सेकेंड ग्रुपिंग ऑफ 3 कंप्लीट हो गया. नाउ थर्ड ग्रुप मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड 1 more 2. ओके, अगर ये ग्रुप मुझे कंप्लीट करना है तो मुझको एक नंबर चाहिए, 1 2 चाहिए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मेरे पास 2 आएगा.
तो यही मेरा आंसर है स्टूडेंट. इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. आपको जितना नंबर कम रहता है उससे मल्टीप्लाई कर दें. यहाँ पे मेरा एक 2 कम है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 256 बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. राइट, गुड. Now the second part of question number 2, second नहीं, fourth part है students. Okay, आपको 675 नंबर गिवन है and you have to find out कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं so that my resulting number should be a perfect cube. Okay, so again we will start with prime factorization. Prime factors बनाएंगे students 675 के 3. Now my factorization is completed. Write these factors. 675 can be written as 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Grouping किया. Now it is very easy student. Second group में मेरा क्या कम है? 1 5 is missing there ना. एक 5 कम है. ग्रुप बनने के लिए मेरे को 3 चाहिए. 2 ऑलरेडी है, एक मिसिंग है. तो दिस इज माई आंसर. इफ आई मल्टीप्लाइड इट बाय 5, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नाउ स्टूडेंट यू नो दैट एक 5 मेरा मिसिंग है, बस यही मेरा आंसर है बेटे. 675 should be multiplied by, it should be multiplied by 5 to get a perfect cube. Clear है students? Good. Now do all other parts of question number 2 on your own. Come to question number 3. Question number 3 is find the smallest number by which each of the following must be divided to get a perfect cube. अब मुझको डिवाइड करना है, राइट? नो इश्यूज. नाउ फर्स्ट वन आई एम डूइंग फॉर यू. फर्स्ट वन इज 81. स्टार्ट मेकिंग देयर फैक्टर्स. 81 के फैक्टर्स कर रहे हैं स्टूडेंट. 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 and 3 1 are 3. So 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 81 can be written as in factors 1 2 3 4, 1 2 3 4. Now students make their group. वन ग्रुप इज कंप्लीटेड. क्या बच गया मेरे पास? ये एक्स्ट्रा 3 बच गया. ये ग्रुप नहीं बन रहा है इसका. सो दिस इज माय आंसर. आई विल डिवाइड 81 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो आई विल डिवाइड इट बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. दिस इज माय आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वन मोर पार्ट आई विल डू. कम टू थर्ड पार्ट. ओके, थर्ड पार्ट इज 135. Start making their factors. You have to tell by which number, minimum number, we should divide the given number to get a perfect cube. तो division में भी हम क्या करते हैं students? We will make factors. Start dividing it. Now who will tell me the answer student? Tell me. हम किससे divide करेंगे students इसको? Yes, 3 का मेरा ग्रुप बन गया है. क्या बचता है? 5 बचता है. ओके, वेरी गुड. सो आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो दिस इज माय आंसर बेटा. वेरी गुड. नाउ स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. डू ऑल द पार्ट्स, ईच एंड पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन नीटली इन योर कॉपीज. योर कॉपीज विल बी चेक्ड बाय द टीचर्स. ओके, बाय बाय, टेक केयर.